Hello students, I Hemant welcome you at Hemdisha English classes. Today I am going to explain the summary of Deep Water from 12th class. The book name is Flamingo, lesson number 3, Deep Water, written by William Douglas. The story Deep Water tells us how the writer overcomes his fear of water and learns swimming with sheer determination with power. He had developed a terror of water since childhood. The writer begins the story by informing us that he had decided to learn swimming at YMCA in Yakima when he was 10 or 11 years old. The YMCA pool was not dangerous and it was only 2 or 3 feet deep at the shallow and 9 feet deep at the other. The author reveals his first fearful experience in the water when he was barely 3 or 4 years old when his father took him to the beach in California. He hung on to his father, but still the powerful waves knocked him down and swept over him. Terror of the overpowering forces of waves was inflicted in his heart. That was the first experience of swimming. What was the first experience? When he enrolled himself for swimming lesson, he when he decided that this fear returned to him. However, he gathered confidence and went to the pool with the water wings. He watched the other boys and tried to learn by aping them. In the beginning, everything was going well, till a big boy of about 18 picked him and threw him into the deep end of the pool while he was sitting alone on the side of the pool to wait for others. The writer landed in a sitting position and went at once to the bottom, swallowing a lot of water. He was terrified, but he had a plan. He decided that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to surface. He played on it and paddled to the edge of pool. But this plan did not work exactly as he had hoped. It seemed it seemed a long way down, and before he could hit the bottom, his lungs were ready to burst. When his feet hit bottom, he attempted to summon the strength of jump. He had hoped to come out of the water safely, but to his surprise, he was rather coming up really slowly. That was in real sense, really slowly. When he opened his eyes, all he saw was dirty yellow water. He tried to scream. He tried to scream for help, but no sound came out as his eyes and nose came out of the water, but not his mouth. He tried to bring up his legs, but they seemed paralyzed. He sank back to the bottom of the pool. The author was feeling dizzy and suffocated. His lungs and head ached, but he was unwilling to give up. He remembered his strategy, but when he went down, he opened his eyes and saw nothing but water with a yellow glow. He was yelling underwater, but he was frozen with fear. That was the first attempt. And what about second attempt? That I would like to tell you over here. Amidst all the terror, he found reason. Once again, he jumped when he hit the bottom, but it was not useful for him. He was still surrounded by water. He trembled with fear as his hands and legs refused to move. Then he saw light. His eyes were out and his nose was almost out as well. But then he started going down for the third time. And this time he stopped giving any effort. He did not do any effort. He stopped. There was no more panic. Everything was quiet and peaceful, and then he passed
into oblivion. When his consciousness returned to him, he was laying on his stomach, vomiting. He heard that nearly died. This unfortunate incident had a very negative impact on his mind and health. He walked home after several hours, but he could not eat. He was trembling and crying. This fear haunted him, and he never went back to the pool. He was terrified for years. The unpleasant memory of the pool is being described over here. A few years later, he heard the water of cascades and wished to get into them, but his fear kept him from exploring. Whenever he was wearing the Titan or bumping river on bathing on the warm lake of the boat rocks, the unpleasant memory of the pool would return to him and leave him paralyzed with fear. He was deprived of the joy of the fishing, canoeing, boating, and swimming as a result of his terror. The next part, there was the swimming instructor. Finally, one October, he decided to learn swimming from an instructor. He practiced in a pool 5 days a week. An hour each day, the instructor put a belt around him and attached a rope to it. He held on to the end of the rope and the author swam across the pool. The terror returned to the author every time his instructor relaxed his hold on the rope. Finally, and gradually he learned to exhale underwater and then raise his nose and inhale. Eventually, the fear of putting his head underwater left him, and then his instructor taught him to kick with his legs. At first, his legs did not work properly, but then bit by bit he could command them. Finally, in April, the instructor was convinced that he could swim the length of the pool. He had created a swimmer despite the approval of his instructor. The author was dubious whether he would still be traumatized. When he was alone in the pool, the fear did come back when he tried swimming alone, but he fought it by swimming longer. He was still not fully satisfied and decided to go to Wentworth in New Hampshire. He died of a dock and Tix Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. Only once he felt the terror return when he was in the middle of the lake, but he paid no heed to it. Yet the another was not sure. At his first opportunity, he went up to the Titan Cameron meadow of the Conrad Creek Trail of Medal Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, he swam across to other shore and back. For the first time, he was sure that he had conquered his fear. Triumph of fear. What was the triumph? Or triumph, we can say rather. This experience gave Douglas great perspectives. He felt that only those who have known terror and conquered it can understand how he felt. He realized that there is a peace in death, and that is the terror is only in the fear of death. He experienced both of the feelings of dying and terror that the fear of death can produce. Now that he had conquered his fear and he felt absolutely free and released. At the end, what I mean to say, the conclusion, we can learn if we are determined enough and have the courage, we can overcome any fear that comes our way with letting the fear overpower us. Thank you, students, for listening me. This will help you to solve your all questions at the time of examinations to find out your answers.
So go through properly, line by line, and this summary is much more helpful for you, that I am damn confident. Once again, I request you to subscribe, like, and share my channel. This chapter, from the book Flamingo, Deep Water, lesson number 3 by William Douglas, I have summarized over here in English. Now I will start in Hindi. विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हेमदिशा इंग्लिश क्लासेस में। मैं 12वीं क्लास का पार्ट डीप वाटर, जो कि पार्ट नंबर 3 है फ्लेमिंगो बुक में से, जिसको लिखा गया है विलियम डगलस के द्वारा। एंड मैं आपको समराइज़ करना चाहूँगा। एक बार इंग्लिश में समरी दे चुका हूँ, अब मैं हिंदी में समरी दे रहा हूँ। मैं इसके पहले की समरी चालू करूँ, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों को भी दीजिए, और एक एक शब्द अच्छी तरह से सुनने का प्रयत्न करके अच्छे अध्ययनरत रहिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में आपके सवालों के प्रश्न ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं जाए, समझिएगा। मैं परिचय देना चाहता हूँ समरी से पहले। यह कहानी डीप वाटर जो है, ये हमें बताती है कि पानी के डर से अपने पर काबू कैसा पाया लेखक ने। सरासर एक प्रतिकल्प, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ तैराकी भी सीखी। उन्होंने बचपन से ही पानी के प्रति डर की भावना विकसित कर ली थी और तैरने का फैसला कर लिया। लेखक हमें सूचित करते हुए कहता है, कहानी बताना चालू करते हैं हम, कि यकीमा में YMCA में तैराकी सीखने का फैसला किया था लेखक ने। कब? जब वह 10 या 11 वर्ष का था। YMCA पुल खतरनाक नहीं था, क्योंकि वो उथले छोर पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था। जब लेखक के पिता ने उन्हें कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए थे, तो लेखक केवल 3 या 4 साल की उम्र में पानी में अपना पहला डरावना अनुभव प्रकट करते थे। वह अपने पिता को पकड़े रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी शक्तिशाली लहरें उसे उथल पुथल कर डालती हैं। अपने बचपन के अनुभव के कारण लहरों की शक्ति का आतंक उसके दिल में बैठ जाता है। अब पहला अनुभव उसके तैराकी का क्या था, ये यहाँ पे बताया गया है, देखिए पढ़ते हैं। जब उसने अपने आप को तैयार किया तैराकी सीखने के लिए, तो उसको फिर से डर लगने लग गया। हालांकि ये बात सही है कि उसने आत्मविश्वास प्राप्त किया था और पानी के पंखों के साथ पूल में गया, और अन्य लड़कों को देखकर सीखने की दृढ़ शक्ति उसके मन में पैदा तो हुई। उसने कोशिश भी की। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब तक कि 18 वर्ष के एक बड़े लड़के ने उन्हें उठाकर उसे पुल के गहरे छोर में फेंक न दिया, जबकि वो पुल के किनारे अकेले बैठा था ताकि दूसरों को देखकर सीख सके। परंतु इस तरह फेंके जाने के कारण वो पानी के अंदर चला जाता है और थोड़ा पानी भी पी लेता है, लेकिन बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन फिर भी वह योजना, एक प्लान बनाता है, और उसने फैसला किया था कि जब उसके पैर नीचे जाएंगे तो एक बड़ी छलांग लगाएगा, सतह पर आ जाएगा, उस पर फ्लैट कम होगा और पुल के किनारे पर पैडल करते हुए चला जाएगा। लेकिन उसकी योजना बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी, और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, एक लंबा रास्ता लग रहा था। इससे पहले वो पुल के किनारे तक पहुंचता, उसके फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। जब उसके पैर नीचे छूते थे तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर कूदने का प्रयास किया। वो पानी से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। वह वास्तव में बहुत धीरे धीरे पानी से ऊपर आ रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि गंदा पीला पानी था, उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि उसकी आंखें और नाक पानी से निकल गई। उसका मुंह अभी तक पानी में था। इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, मतलब दूसरा प्रयास करने की कोशिश, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूरी तरह से थक के चूर हो चुका था, यहाँ पर लेखक अपने बारे में बताता है, परंतु उसके बावजूद भी
कोशिश से इनकार नहीं करता। देखिए कितनी हिम्मत की बात कि कोशिश से इनकार नहीं करता, फिर भी वो कोशिश करता है लेकिन फिर वो फेल हो जाता है। अब वो डर से थोड़ा थरथराने लग गया और उसके हाथ पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फिर उसने देखा क्या एक हिम्मत का प्रकाश, उसकी आंखें बाहर थी और उसकी नाक लगभग बाहर ही थी, लेकिन वो तीसरे बार नीचे जाने लगा। इस बार लेखक ने प्रयास करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन लेखक विस्मरण में जा चुका था। जब लेखक होश में आता है तब अपने आप को पेट के बल लेटाकर उल्टी कर रहा होता है। उसने सुना कि लगभग मर ही गया था वो तो। इस दुर्घटनापूर्ण भाग्य का उसके दिमाग और स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो कई घंटों तक भी कांपते हुए घर वापस आता है और इस डर की वजह से वो पूल में वापस कभी नहीं गया। यह अप्रिय स्मृति उसके पूल के प्रति जो स्मृतियाँ हैं, यह अप्रिय उसके दिमाग में हैं। कुछ साल बाद उसने कैस्केड के पानी के बारे में सुना और लेखक को देखने का मन किया, लेकिन उसका डर जो था तलाशने से रोकता था। अब भी वह टाइटन या बम्पिंग नदी से गुजर रहा होता तो गर्म झील में स्नान कर रहा होता था तो पूल की अप्रिय स्मृति लेखक को परेशान करने लग जाती थी। इस आतंक के परिणाम स्वरूप वो मछली पकड़ने नौकायन या तैराकी के आनंद से हमेशा वंचित रहा। तैराकी प्रशिक्षक अब ट्रेनर आ गया पानी में। अंत में एक प्रशिक्षक से उसने तैराकी सीखने का फैसला किया और प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर बेल्ट लगाया और एक पूल में सप्ताह में 5 दिन हर दिन 1 घंटे प्रयास किया। वो क्या करता था, प्रशिक्षक की उसके चारों ओर बेल्ट लगा देता था, उसमें रस्सी लगाई और प्रशिक्षक रस्सी को पकड़े रखता है, परंतु जैसे प्रशिक्षक रस्सी ढीली करता लेखक के अंदर डर बढ़ने लगता। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा वह सोचता है। धीरे धीरे पानी के नीचे उसने सांस लेना सीख लिया। आखिरकार पानी के नीचे अपना सिर डालने का डर तो उससे दूर चला ही गया। फिर प्रशिक्षक ने उसे अपने पैरों से किक करना सिखाया। पहले उसके पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पल में तैरना सीख ही लिया। तो उसने अपनी प्रशिक्षक की मंजूरी के बावजूद लेखक संदिग्ध था कि वो पुल में अकेले होने पर भी अभी डरेगा नहीं। डर वापस आया तो उसने अकेले में तैरने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक तैरकर लड़ा। अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। फिर भी न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ जाने का फैसला किया। उसने एक गोदी और ट्रिक्स द्वीप में गोता लगाया और एक झील में 2 मील की दूरी तैर कर पार की। देखिए, डर के ऊपर जीत। केवल एक बार जब वह झील के बीच में था तो उससे फिर से डर लगने लग गया, लेकिन उन्होंने डर पर ध्यान नहीं दिया और तैरते चले गए। फिर भी लेखक निश्चित नहीं हुए। इस तरह अपने डर का सामना बार बार करते हुए पहले उन्हें यकीन था कि उसने अपना डर जीत लिया था। इस अनुभव ने डगलस को महान दृष्टिकोण दिए। उन्होंने महसूस किया कि केवल वे लोग जिन्होंने आतंक को जान लिया है और जीत लिया है, वे ही तो समझ सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा। उन्हें मरने की भावना और आतंक का अनुभव किया, जिससे मृत्यु का डर पैदा हो सकता है। अब उसे अपना डर भी जीत लिया था तो वो बिल्कुल मुक्त महसूस कर रहा था। आखिर में निष्कर्ष इस समरी का ये निकलता है, डीप वाटर की समरी का हम सीखते हैं कि यदि हम पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित हैं और ये साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हम किसी भी भय को दूर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये समरी थी डीप वाटर की फ्लेमिंगो पार्ट से पार्ट नंबर 3, और आशा है कि आप लोगों ने अच्छी समझने की कोशिश की होगी। आप अच्छी तरह से सुन रहे होंगे और मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी प्रकार आप थोड़ी अध्ययनरत करते रहें तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हर सवाल का जवाब देने के लिए, और आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार रख सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश, आप समझ गए ना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
मेरे चैनल को। मैं क्यों कहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले और अच्छी तरह से समझते रहें, सीखते रहें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, उन्नत रहें, अव्वल नंबर से पास हुए। मिलते हैं अगली कहानी में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू